में जो किया है आपके सीबीएसई बोर्ड में, वही आपको पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा लेवल, थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। मतलब आपको वही पूछेंगे जो आपने पढ़ा है, जो आपने सॉल्व किया है, वही न्यूमेरिकल्स आएंगे, वही प्रॉब्लम्स आएंगे, वही सब कुछ है। लेकिन थोड़ा सा उनका एटीट्यूड जो होता है पूछने का, वो थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए हमें वो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अलग लगता है। लेकिन उसमें कुछ भी अलग नहीं है, जस्ट इट कैन, यू कैन गेन दैट नॉलेज एंड यू कैन अप्लाई योर नॉलेज। मतलब आपने जो लिया है 2 साल में, 9th और 10th में, वही नॉलेज आपको सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मतलब कैसा, कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको जो चैप्टर दिए हैं, साइंस के जो चैप्टर है, वही चैप्टर में से वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट कोई भी चेंज नहीं होगी, कंसेप्ट आपको सेम है। आप क्वेश्चन पेपर कोई कौन सा भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें जो आपके क्वेश्चन जो पूछे हैं उन्होंने, वो वही कंसेप्ट पे पूछे हैं जो हर साल पूछते हैं। मतलब थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा उनको जो लेवल है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। कभी कभार कभी कभी तो वह बहुत सिंपल आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं जो कि आप वहां पे अच्छे से कर नहीं पाते। इसका अब यहाँ पे जब आए हो आप, तो आपको जो मेन गोल है आपका कि आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। आपने स्टडी की है, नो डाउट आपने किया है, सब कुछ किया है। आपने 10th भी अच्छा किया है, आपने उसमें थ्योरी के क्वेश्चन भी अच्छे किए, यू वेरी गुड विथ एमसीक्यूज। और आपने जो आपके 10th में जो हुआ है वही आपको, वही थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लेवल और थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा और ज्यादा सोच के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब आपको आपने जो कंसेप्ट किए, फॉर एग्जांपल आपने सपोज यू डील्स विद कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, अगर आपने कार्बन के बारे में पढ़ा है, कोई डाउट्स है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। अगर आपको कुछ डाउट है रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर, रिगार्डिंग द कंसेप्ट, रिगार्डिंग द गैट केमिस्ट्री, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नो डाउट। कोई भी डाउट अगर हो तो कृपया करके प्लीज आस्क टू मी। Okay, so I will explain the how what type of question they have SPI particularly asked. कौन से क्वेश्चन आएंगे? देखो, क्वेश्चन कुछ ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा टफ ट्विस्टिंग होती है। डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल, और कुछ गैट केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है आपके 4 चैप्टर 9th के, 4 चैप्टर 10th के, सो उसमें से ही आपको पूछा जाएगा। उसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके, उनके दिमाग में एक ही रहता है कि इस बच्चे ने 9th और 10th में क्या किया, आपका 9th और 10th कैसा था, आपने 9th और 10th में कंसेप्चुअल कैसे आप गए। मतलब कोई भी एग्जाम हो, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है आपकी, तो फिर आपको जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगी। उसमें कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन कहीं घुमा फिरा के, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं, घुमा फिरा के भी रहे तो कंसेप्ट एक ही होगी, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि अगर हम 10th की बात करेंगे, 10th में आपको जो चैप्टर है पर्टिकुलरली साइंस टॉपिक में, साइंस में जो भी आपको चैप्टर है, उसी चैप्टर में आपके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फॉर एग्जांपल आई विल गिव द एग्जांपल, आपको जो गैट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको जो कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स है, कार्बन के बारे में हमने ऑनलाइन भी पढ़ा है और ऑनलाइन भी बहुत कुछ समझ लिया है। लेकिन पर्टिकुलरली हम यहाँ पे जो आए हैं वो एग्जाम, और हाउ टू डील्स विद दैट एग्जाम। उस एग्जाम में टाइम कम है और आपको बहुत सोच के आंसर देना है क्वेश्चन की। लगता तो हमें ऐसा, ऊपर से देखा तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लगता है हमको कि बहुत सिंपल है, लेकिन लेकिन अगर हम कंसेप्चुअल जाएंगे तो कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि वो उस क्वेश्चन की डेप्थ क्या है। मतलब कभी कभी एक ही बार क्वेश्चन, आज एक ही बार थोड़ा सा सोच लिया तो क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो जिन्हें ज्यादा डिप में और ज्यादा, एक से दो से ज्यादा कंसेप्ट एप्लीकेबल होते हैं, एक ही दो से ज्यादा भी कंसेप्ट हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वो आपको, वो कैसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ओके, फर्स्टली आप बहुत अच्छे से, कुछ डोंट वरी अबाउट हाउ टू डील्स विद साइंस टॉपिक, मैं आपसे करवा लूंगा और अच्छे से करवा लूंगा। सिर्फ आपको जो है वो कंटिन्यू रखना है और कंटिन्यूटी में रहना है। टाइम भी बहुत कम है और इस टाइम में यह हुआ जो टाइम फ्रेम है 1 मंथ, नियर अबाउट एक ही महीना, 1 मंथ का टाइम पीरियड हमारे पास है
रैंडमली देखेंगे तो। यस प्लीज, कोई नॉइज, कोई तो भी। इसका माइक ऑन है। वेदांत का वहां प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, आपके माइक स्विच ऑफ करो प्लीज। ओके। हाँ, कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो। फर्स्टली आई आई विल इंट्रोड्यूस यू। हार्ट इज, हमको क्या चाहिए आपसे? अगर आपका सिलेक्शन करवाना है तो आपसे क्या चाहिए? एसपीआई को, आपसे एसपीआई को कुछ ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। आप जो पढ़े हैं, जो आपने 9th और 10th में किया है, वही आपसे अच्छे से हुआ है क्या नहीं, आप वो क्राइटेरिया एलिजिबल, वो उसमें बैठते हो कि नहीं। क्योंकि वहां जो है आपको उस 2 साल में आपसे बहुत कुछ करवा लिया जाएगा, लेकिन आप जो है बेसिक क्या आपका, क्या आप उस वो लेने में आपका नॉलेज जो है, आपका जो लेवल है, वो वहां तक है कि नहीं, ये आपसे चेक, वो चेक करते हैं। सो इन गैट केमिस्ट्री, तो पर्टिकुलरली हम फर्स्ट से हम पहले तो हम डील करेंगे व्हाट इज, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। साइंस में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन, जस्ट व्हाट इज मीन बाय दैट, व्हाट इज दैट कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चैप्टर लिया आपका, सपोज फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नहीं कि एटम क्या है, उसमें कौन से पार्टिकल्स है, मैटर किसे बोलेंगे हम, मैटर का कंस्टिट्यूएंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, हाउ हाउ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड, हाउ व्हाट इज एटम, how atom are made, how atom are combined together, what is the chemical reaction and how chemical reaction is takes place। ये सब बातें, मतलब पूरा की पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। बेसिक मतलब बिल्कुल एटम से, एकदम एटम के अंदर में क्या है, एटम के अंदर बाहर क्या है, और एटम में क्या क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूट्रॉन कहाँ पे। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम मैटर। मैटर किसे कहेंगे हम? व्हाट इज दैट मैटर? how you can define the matter, matter किसे कहेंगे हम? So matter is anything what we call matter। how you can define, you can, we have defined the matter, how you can define the matter, can you uh, mm, imagine what is the matter? You can simply, Anything we can which say matter is occupies anything, space. matter is anything which occupy the space, anything which occupy the space and having mass. It can occupy the space, by the space and having mass. So it can occupy the space and having mass. So anything which is occupies space and having mass. So matter having 3 state. Which one? Solid, liquid and gaseous. Now fourth state is also available. Fourth state is also exists, but it is not in your syllabus. That is different things and different phenomena. That is the solid, liquid and gas, 3 phase of matter, and fourth phase is the condensed state phase or ionic phase. So that phase is not our discussion. You can focus on what is the matter. So matter are made from very teeny small particles, very tiny small particles called atom. So what is the definition of atoms? Atom, or you can say atom. Atom is what? In a very long year ago, when the eminent personality like Antonio Levizor or Maharishi Kanad, he defined what is meant by the that what is the smallest part of how the how matter are made from very small particles. So matter can made from very small particles. Particle in the sense of atom. Atom are smallest individual part of matter. What I say, atoms are smallest individual part of matter which cannot further divide. We cannot divide the matter. So we cannot divide the atom. Atoms are smallest part of matter. What I say, I repeat again, atoms are smallest part of matter which cannot divide. Means atom are having its own identity. For example, atoms of hydrogen atom. Hydrogen atom particularly, this positive charge and this electron, it is a hydrogen atom, one electron and one proton is present in
hydrogen atom. So atoms, when number of atoms they are combining, how they atoms are combining together to form a molecules. That is, atoms are, firstly we can define atoms are smallest part of matter, smallest part of matter which which cannot divide, which cannot divide, and it has its own chemical property, own chemical property, its own chemical property. Chemical property in the sense, atoms can react it when two or more atoms are reacting together to form a molecule. Means a group of atom, they can bond with each other. What I say, a group of atom which can be bound with each other by a chemical force. That chemical force which is called chemical bond. When atoms are combined together, the molecules, look, molecules, what is meant by that, molecules? When atoms are combined together, when atoms combine to form molecules, atoms are combined together to form a molecules. So why atoms are combined together? That is the very big question. एटम क्यों कंबाइन होंगे, क्या जरूरत है उनको कंबाइन होने की, क्यों होने वाले, वो कंबाइन होंगे तो कैसे कंबाइन होंगे? सो दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. व्हाई एटम आर कंबाइन, व्हाट नेसेसरी फोर्स टू एटम्स आर कंबाइन टुगेदर, कौन सा फोर्स है जो एटम्स को कंबाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंड बेसिक क्वेश्चन इज why atoms are combined together and why molecules are formed. It is a very basic question. So the atoms are combined means a chemical reaction is takes place. When atoms are combined together, they are bonded with a force. Atoms can bonded together in a force called, so atoms bonded together by a force called chemical bond. Chemical bond. Look, what is the, yes, in previous year the question is a very basic question asked to in SPI exam. What is the chemical bond and why chemical bond are formed? Like this, very basic question. Why, what type of bond form? What is the chemical bond? Chemical bond is, you cannot say chemical bond is like ionic bond, covalent bond, electrovalent bond, or hydrogen bond, van der Waals bond. That is a type of bond. Why? Basic question is why atoms are combined together and to form a bond. It is a basic question. Why atoms are combined? Which one force present in atom which can hold the atom together? It is a chemical force. And this chemical, why this chemical force bond atoms can hold together? Because of a force is present to hold that atom together, is called chemical bond. And why bond is formed? Because of certain atom bonds are formed between metal and non-metal, metal and metal, metal and non-metals and metalloids. So like this, so different types of bond we have to, we cannot go further details. So firstly, what is meant by the chemical reaction? I just asked a question. Think in your mind, what is meant by the chemical reaction? Can you give the answer in chat box? अगर आपको पता है, आप can you define the what is meant by the chemical reaction? How you can define the chemical reaction? What happen in chemical reaction? क्या आप define कर सकते हैं? चलो बताओ मुझे chat box में. Yes, to attain force of attraction, to attain the stability. Very good. Something you can, you have to think. Very good. To attain the stability in the sense of it can complete the octet, the reaction. What force causes to react atom together? That is very important. What forces are causes to atoms are reacted together? So we have to define what is meant by the chemical reaction. Just
you can have a defined chemical reaction. Chemical reaction. Chemical reaction. How you can say chemical reaction? No doubt, a bond between the atom break and to form a new bond. Means a chemical reaction, generally what happen in chemical reaction, old bond is break and new bond is formed. Now look, we cannot ask the nuclear reaction. Chemical reaction is a different thing, nuclear reaction is a different thing. केमिकल रिएक्शन अलग है और न्यूक्लियर रिएक्शन अलग है. बोथ आर रिएक्शन, नो डाउट, both are the reaction, but they are totally different. Chemical reaction is different and nuclear reaction is different. So how you can define the chemical reaction? So chemical reaction, just we can define in one line. One line sentence is enough to define the chemical reaction. So it is the reorganization of an atom. Reorganization. It is the reorganization of an atom. Atom. It is the reorganization of an atom called chemical reaction. Chemical reaction. अब किसने दी ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन दी है एंटोनियो लेवाइजर. Who is Antonio Levaizer? He is the father of chemistry. Father of chemistry. Antonio Levaizer is the father of chemistry. So reorganization of atom. How reorganize the atom? Atom reorganize means old bond are break and new bond are formed. So it is a necessary condition to reorganize the atom, means old bond are break and new bond are formed. So reaction, generally in the chemistry, can you define the chemistry? Just we can go through in more detail in subject chemistry. Can you define the chemistry in one line? Tell me what is the definition of, you can type in your chat box. आपके chat box में आप answer कर सकते हो. What is define the chemistry? What is my question? Define the chemistry. A process where various reactants react together to form a product. Very good. I think the Pravaj Yadav and Aviraj Kotte, a branch of science which deals with chemical reaction. Yes, it is a branch of science which deals with chemical reaction. But my question is, a chemical reaction is just a reorganization of an atom in single line, not to go much more. Yes, it is without a atom, it's not possible a chemical reaction. So a definition is given by the Antonio Levaizer, who is a father of chemistry, and very simple definition he has to given to you. It is a reorganization of an atom. Simply, the chemical reaction is a reorganization of an atom. So can you define the chemistry? Define chemistry in your chat box. Yes, we have some study of structure of substances, study of elements. Yes, study of elements is okay. That is a study of elements. Okay. So structure of study of elements, no doubt. Only elements की study होगी. फिर तो physical property और element छोड़ के chemistry कुछ metal है, non metal element की study है. हाँ, ये भी चल सकता है, no doubt. और कैसे आप define कर सकते हो? Now I can defining how to define the chemistry. Yes, please. Okay. मैं बताऊंगा. Okay, don't worry. Chemistry, it is the science of molecule. It is science of molecules and their transformation. Their transformation. It is the science of molecule and their transformation. Transform molecule. You can deal with molecules, how molecules are formed, how molecules are break. It is the
branch of science which deals with structure, properties, reactions, the physical properties, chemical properties, and all these things. The definition goes to 3 to 4 lines. So simple way you can define, it is a science of molecule and their transformation. और ये definition किसने दी है? ये definition दी है एंटोनियो लेवाइजर ने. It is the science of molecule and their transformation. What is the chemistry? Chemistry is the science of molecule and their ट्रांसफॉर्मेशन. वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन. और ये डेफिनेशन किसने बताई हमें? ये डेफिनेशन हमें एंटोनियो लेवाइजर ने बताई. किसने बताई? एंटोनियो लेवाइजर. ओके, सो इट इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. सो विच वन इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल? कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमने फर्स्ट डिस्कवर किया? पहला मॉलिक्यूल कौन सा हमें पता चला कि जो मॉलिक्यूल इस एलिमेंट से बना है? कैन यू गेस which one the first molecule in chemistry which we have to define? ये इस दो एटम से दो एलिमेंट से, और एक एलिमेंट इसका और दो एलिमेंट इसके, इससे बना है. कौन सा मॉलिक्यूल है? क्या आप गेस कर सकते हो? आर यू एबल टू गेस दैट which one the first molecule we have to know its composition by chemically? Yes, very good, I like it. H2O. Very good, very good. I like it. H2O. DNA discovered very later on. So H2O. So H2O is combined from 2 hydrogen gas and 1 oxygen gas to form H2O. Water molecule are formed. H2O in gaseous. This molecule where Antonio Levizeur studies the water molecule. When 2 hydrogen atom are combined with 1 oxygen atom and to form water molecule. Water is the very essential compound for all living thing, because without water we cannot exist. Living system cannot exist, because water is the universal solvent. Water is the universal life, or water is required for everything. वाटर से ही हम, वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, और ऑल एवरी एक्टिविटी के लिए वाटर चाहिए. वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर every activity, and water having properties of water is a very different and very exciting. एक वाटर की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत एक्साइटिंग है एंड डिफरेंट है. बिकॉज व्हाई? बिकॉज वाटर कैन हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. सो इट इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल which is discovered by Antonio Levizeur. Okay, so we have more about the molecules. So okay, we can have particularly we can start the how elements are combined together, which one types of bonds are formed. Did you know the which one how much types of bond? I give the idea. Types of bond. What is mean by the bond? Bond is the a chemical force present between atoms called bond. So the types of bond, there is a basic types, 4 basic bond and main bond, and other are subsidiary bond. So first is ionic bond. उसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे. आयोनिक बॉन्ड. सेकंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड. थर्ड वन इज द कोवैलेंट बॉन्ड. थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. इलेक्ट्रोवैलेंट, वी in general we also called electrovalent bond. Ionic bond, covalent bond, electrovalent bond, and fourth one is the metallic bond. It is a primary type of bond.
primary bond, and another one is a secondary bond. It is a primary bond. Secondary bond is fifth one is the hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड. फिफ्थ सिक्स्थ वन इज द वंडरवॉल बॉन्ड्स. वंडरवॉल्स बॉन्ड. And seventh one is London forces. London force, or you can say van der Waals bond or London force. That is a subsidiary bond, which can play very weak interaction between the atoms. Weak interaction है. That is the van der Waals bond and hydrogen bond. It is a secondary bond. These bonds are secondary bond. But primary bond are ionic bond or electrovalent bond, the covalent bond, and coordinate bond and metallic bond. So particularly I have give you the ideas of this bond, how these bonds are formed. So first one is the ionic bond or electrovalent bond. How ionic bond and electrovalent bond are formed. Look, very simple is there. Electrovalent bond are formed between the two elements which is having one is a metal and non-metal. मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा और आयोनिक बॉन्ड होगा. आयन आर फॉर्म. नेम इज इटसेल्फ टेल अस अबाउट व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट बॉन्ड, आयोनिक bond. So before discussing about ionic bond, we can have how to draw or what is mean by the atom. Atom के बारे में हम बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिटेलिंग थोड़ा सा और पढ़ेंगे. So atoms, how atoms are made. So look, by using the atom can define so many peoples like Rutherford atomic model, Bohr's atomic model, and Schrödinger quantum mechanical models. So now recently the quantum mechanical models are very acceptable. Otherwise when Thomson models are it having limitation. Thomson ने भी atomic के बारे में, atoms के बारे में बहुत कुछ बोला है, बोर्स ने भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन वो after some time they have some limitation and we cannot particular say it is a perfect atomic model. The now a day perfect atomic model or quantum mechanical model, it is very important because quantum mechanical studies, quantum mechanical model. Are you understood a quantum mechanical model? What I say quantum is it is a quanta. Look, quantum atomic model, quantum mechanical model. Atoms. Quantum mechanical. Quantum mechanical model. So this model, quantum mechanical model, this model can explain how atoms are made, किससे एटम बना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करेंगे, what is the shell, what is the core of electron, nucleus. So atoms are made. So look here, quantum means quanta. Look the word quanta. Quantum is energy, energy packets. Energy packets. Quanta is nothing but energy packets. और quantum mechanics, energy packets की study हम करेंगे, उसे हम quantum mechanical model कहेंगे. Why we are studying the quantum mechanical model? Because this model are more sufficient, more clearly explain how the structure occurs, atoms, what is atoms and how atoms are made from electron, proton and neutron. So electron, proton, electron are particles and particle nature of electron is studied by a quantum mechanical model. What I say, a particle nature of electron is studied by quantum mechanical model of an atom. Particle nature of electron is studied by quantum mechanical model of an atom. So quantum mechanical model. So what is mean by that atom particular and how atoms are made? Look, atoms, which is the inside there is a nucleus.
and the outer side there is a shell. It is a principal shell, K shell, M shell, N shell. So it is a positive center. This is the first shell, second shell, it is a circular shape, second shell, this one is the third shell, fourth shell. So look here, it is the first shell. So what is called K shell, and K, it is called K shell, K shell, and it is having n is equal to 1, first shell, n is equal to 2, then second shell n is equal to 3, n is equal to 4. So first shell, second shell, third shell, fourth shell, shell, principal shell. It is a principal shell. Principal shell. So it is outer shell. Outer shell, or we can say valence shell. Valence shell, outer shell or valence shell. It is called inner shell. Inner shell. Inner shell. This particular, this region having positive charge called nucleus. Nucleus. Nucleus or nucleus are made from proton and neutron. Proton and neutron. So remember, atoms having inner side there is a small, very small. The size of nucleus is 10 raised to power minus 15 meter, and the size of atom is 10 raised to power 10 meter. That is the size of atom. And size of nucleus, compare the size of atom with size of nucleus. अगर हमारा पूरा क्रिकेट का पूरा ग्राउंड अगर एटम है तो न्यूक्लियस की साइज कितनी है? न्यूक्लियस की साइज आपका जो बॉल है उतनी साइज, इतनी साइज न्यूक्लियस की है, और पूरा जो क्रिकेट का स्टेडियम है, पूरा जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो आपका क्या है? एटम. सो कंपेरेटिवली साइज ऑफ एटम्स एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम, एटम कितना है? पूरा क्रिकेट का ग्राउंड क्या है? एटम. और न्यूक्लियस की साइज कितनी है? वो जो बॉल है आपका खेलने का, वो बॉल की साइज, दैट इज द न्यूक्लियस. मींस द साइज ऑफ न्यूक्लियस एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है as compared to size of atom. So you can have a compare the size of ground, cricket ground, and size of atom, size of that ball is the nucleus and the entire ground is the atom. So here this positive center, here charge is positive. Why? Because this charge, this why this nucleus having positive charge? Because nucleus having positive charge, because it containing protons and neutrons. So neutrons having no charge and proton having positive charge. Because of positive charge of proton, here this all the proton are situated inside the nucleus. Nucleus के अंदर में proton है. So inside the nucleus there is a proton. So this proton having positive charge, and due to the positive charge, here is a positive charge, and the electron present in the shell is K shell. This one is the K shell, L shell, M shell, N shell. मैंने सिर्फ आपको मेन शेल पढ़ाई, मेन शेल के बारे में बता रहा हूं मैं आपको. शेल में भी सब शेल है. लाइक मैं आपको क्या शेल एंड सब शेल, मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. सो ये जो मेन शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, इनमें भी सब शेल है. मींस मेन शेल हैविंग सब शेल. अगर फर्स्ट फ्लोर में सब, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, ऐसे, मतलब शेल में भी सब शेल है. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दिस पॉजिटिव चार्ज of nucleus and negative charge electron. So positive charge nucleus and negatively charged electron. So there is a force. The force present between positively charged nucleus and negatively charged electron. Positively charged nucleus and it's cell. It is not a CEL shell.
इट इज सेल नहीं, वो शेल है, शेल. somebody सेल वो बायोलॉजी की सेल है. it is a shell, it is a shell, so it is a nucleus and first shell. किसने कमेंट्स किया कमेंट बॉक्स में? शेल, सेल नहीं, वो शेल है, शेल. सो इट इज अ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, मेन शेल. उसमें अगर बोर्स का अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इट इज ऑर्बिट. ऑर्बिट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट and shell model is a different concept. Shell is the quantum mechanical concept and orbit is the Bohr's concept. Bohr's having also defined the circular orbit. Orbit is the different concept and shell is the different concept according to quantum mechanical model. So electron है मतलब क्या है? How you can define? ये अब आपका पॉजिटिव सेंटर है, न्यूक्लियस है. अब इलेक्ट्रॉन हाउ दे कैन रिवॉल्व, आपको 3 डायमेंशन में आपको कैसा बताना है? देखो ये इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड दिस रिवॉल्व लाइक दिस. ओके, इन पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, वन पर्टिकुलर डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व लाइक दिस एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व लाइक दिस. सो इट पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में. सो दिस कोर इज कॉल्ड शेल. सो मतलब आप जो कवर है, अगर आप लेमन आपने उसके छिलके निकाले तो वो जो तीन पार्ट है वो क्या है? शेल है. फर्स्ट शेल, सेकंड शेल. देखो शेल जो है कैसी है? ये फर्स्ट शेल इतने डिस्टेंस में, ये जो है ये शेल है, यहाँ पे इधर ही मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में यहाँ पे. मतलब ये देखो यहाँ पे इस एरिया में, ये जो पूरा डार्क एरिया है इतनी, इसके अंदर ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा. फिर दूसरे शेल में ये इतना जो एरिया है इसके अंदर ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा. इसके बाहर जो है ये जो एरिया है पर्टिकुलरली, ये छोड़ के ये दोनों, ये एम्प्टी स्पेस है, दैट इज एम्प्टी स्पेस, नथिंग इज देयर. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उससे बाहर नहीं, उसके अंदर नहीं. दैट इज पर्टिकुलर एरिया हैविंग इलेक्ट्रॉन कैन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. वहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होने के चांसेस ज्यादा है. दैट मीन्स द पर्टिकुलर एरिया having probability of electron is maximum. In that particular area, probability of electron is finding the electron is maximum. That area is called shell. What I say again, I repeat, the probability finding the electron in a particular area is maximum, called shell. उसे हम shell कहेंगे. That is principal shell, KLMN, main shell. सब शेल भी है उसमें, वो हम बाद में देखेंगे, उसका भी डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट अबाउट रफ आइडिया अबाउट व्हाट इज द एटम एंड हाउ एटम्स आर मेड फ्रॉम. सो एटम, पर्टिकुलरली in atom why the nucleus of center is positive? Because of proton उसके अंदर है इसलिए वो पॉजिटिव है. प्रोटॉन बाहर नहीं, प्रोटॉन अंदर है, इनसाइड द न्यूक्लियस, और उसकी साइज बहुत कम है, वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम. और इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसके अराउंड न्यूक्लियस कैन, अराउंड इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व. व्हाई इलेक्ट्रॉन, माय क्वेश्चन इज, लिसन, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस? ये मेरा सवाल है. अब जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ. क्वेश्चन फिर से एक बार सुनो. व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस? चलो बताओ चैट बॉक्स में. Why electron can revolve around the nucleus? Is my question is why? Due to electromagnetic force. Yes, nucleus is positive charge. Yes, Gayatri Panchal. Nucleus is Viraj Kote. Due to electrostatic force. That's a word is very important. Great. Why electron can revolve around the nucleus? A word is very important. किसने क्या कहा? Due to the electrostatic. Aviraj quote, he gave the accurate answer. Yes, the electromagnetic force, it is not electromagnetic force, it is the electrostatic force. Electrostatic force. Somebody answered in chat box, electrostatic force. It is the static force. Electrical means electrical. Why electrical? Because this nucleus having positive charge and electron having negative charge. So electrostatic, there is a electrostatic force. This electron having negative charge, outer shell, again this electron having negative charge, this electron having negative charge, this electron having negative charge. So there is a force present between the
nucleus and electron, there is which one force is there? Electrostatic force. Electrostatic force. Electrical. Electrostatic means stable, isn't it? It is not a fluctuating like यहाँ वहाँ कुछ भी ऐसा fluctuate नहीं होगा. It is no doubt it is a electromagnetic नहीं, electrostatic. Somebody answer. Somebody says electromagnetic. The electromagnetic wave phenomena is different, and here electrostatic force between positively charged nucleus and negatively charged electron. The force which is responsible to revolve the electron around the nucleus is electrostatic force. Means electrostatic force, how the positively charged nucleus and negatively charged electron, positively charged nucleus and negatively charged electron, called electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electron. I repeat again this very important sentence. Why electron can revolve around the nucleus? Why electron can revolve around the nucleus? Because of electrostatic force present. Electrostatic force present between positively charged nucleus and negatively charged electron. So how, look here, the number of proton is number of electron. Number of electron is equal to number of proton, isn't it? अब थोड़ा बहुत एक दो इलेक्ट्रॉन वो एक्सचेंज करेगा, शेयर करेगा, वो अलग बात है. केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए it is depends on the atom to atom. So इलेक्ट्रॉन में भी वेरिएबल, एक दो इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर भी दिया तो वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा. लेकिन प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते. मींस व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन इज ऑकर, there is a exchange, sharing or transfer of electron is occur, not a proton. Proton are stable, and that's why we can say atomic number. Atomic number is completely depends on the number of proton present in an atom. What I say, atomic number. Atomic number is totally depends on how many proton present in an atom. Means the total number of proton is equal to atomic number, not electron. Electron slightly vary. मतलब कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, कभी कभी किसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेगा, कभी कभी शेयर हो जाएगा, कभी कभी तो बता नहीं सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है. आपके पास 3 टाइप्स ऑफ मैटर है, मेटल, नॉन मेटल एंड metalloid. So depends on the category of metals. Metals having, they can readily donate the electron. अगर metal है तो donate कर सकता है, non metal है तो accept करेगा, metalloid है तो share करेगा. और अगर metal metal में bond है तो that is the metallic bond. metal non metal में bond है तो that is the ionic bond. और non metal bond है तो that is the purely covalent bond. And another type of bond is the अगर there is a some poles are generated, there is a to form hydrogen bond. So the bond formation of bond is depends on the how many electron is available to form a bond. Electron outer shell के electron depend, outer shell के electron पर depend करेगा. Okay, so my point of discussion is there is a force of attraction, force present. इट इज, ये यहां अंदर भी नहीं जाने देगा और बाहर भी नहीं जाने देगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. सो द नेसेसरी, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, देयर इज द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. The necessary centripetal force provided by the electrostatic force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. There is a necessary centripetal force. A force can be provided. This positive and negative charge, they act as a force and they are responsible for revolution of electron around the nucleus. So let's and how it is about a force of attraction between positively charged nucleus and negatively charged electron. Now we have a first shell, second shell, third shell, fourth shell. So there is a particular capacity. फर्स्ट शेल की कैपेसिटी, सेकंड शेल की कैपेसिटी एंड थर्ड शेल की कैपेसिटी. ये एक पर्टिकुलर एक कैपेसिटी है, हर एक शेल की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है. दैट डिपेंड्स ऑन द हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट कैन बी ऑक्यूपाई. So let's start with hydrogen atom. So let's start with the capacity of shells. So you can draw a very simple
डायग्राम, वेरी सिंपल चार्ट और डायग्राम, हाउ टू फील द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे आप फील करोगे, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. सो एनर्जी, एनर्जी. अब देखो आपको 9th और 10th में आपको इलेक्ट्रॉन, फीलिंग द इलेक्ट्रॉन आपके बारे में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं किया है, लेकिन आपको हाउ इलेक्ट्रॉन कैन फील in first shell, second shell, third shell. So it is a first shell, second shell, third shell. How electron are filled. So in y-axis there is energy and x-axis there is a distance. Energy and distance. So there is a first shell 1s, 2s, 3s. अब ये yes क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा. 4s, 5s and 6s. एक लाइन छोड़ दो, बाद में आएगा 2p, 3p, 4p, 5p, 6p. एक लाइन छोड़ दो, यहां पे आएगा 3d, 4d, 5d, 6d. एक लाइन छोड़ दो, यहां पे आएगा 4f, 5f, 6f. ओके. सो अब मुझे लगता है आप ये ड्रॉ कर सकते हो. पहले 1s, 2s, 3s, 4s, 5s ऐसा लिख लो, एक लाइन छोड़ दो, फिर सेकंड लाइन 2p, 3p, 4p, 5p, 6p ये कर लो, फिर 3d, 4d, 5d, 6d, देन वन लाइन छोड़ दो, 5, 4 या 5 या 6 या. सो ऐसा आप लिख लो. सो इट इज फर्स्ट शेल कॉल्ड के शेल, और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. दिस सेकंड शेल, के शेल के बाद कौन सी आती? के यल शेल, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन. देन थर्ड शेल, के एल एंड एम शेल. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 10 and 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स. त्याचा मैक्सिमम इट्स कैपेसिटी देखो, न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी, सेकंड शेल की देखो, इट इज अ न्यूक्लियस. अब पहली शेल थोड़ी साइज कम है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन बैठेंगे. दूसरी शेल उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठेंगे. तीसरी में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैठ, साइज बढ़ रही ना. जैसे जैसे हम ग्रेजुअली वी goes from away from nucleus, the size of atom increases. When we goes from away from nucleus, the size of atom increases. So 8 electron, and this one k l n shell, and how many electron it has? 32 electron. Its capacity 32 इलेक्ट्रॉन की उसकी कैपेसिटी है. देन 1s के बाद क्या आएगा? 2s. देखो मैं कैसे, अब हाउ वी कैन फील, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा. पहले आप समझ लो कि मैं आपको से क्या बताना चाह रहा हूं. दैट इज द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम. एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे आप. देखो ये है फर्स्ट शेल, 3d फर्स्ट शेल. दिस वन इज सेकंड शेल. ओके. दिस वन इज थर्ड शेल. First shell, second shell and third shell. Valency, very good, very good. Nuclear are more reactive. Nuclear is more reactive, but it can require some initiation. That nucleus are more reactive, no doubt, but it can initiate by nuclear reaction. I already told you, nuclear reaction is a different phenomena and chemical reaction is a different phenomena. बेटा मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन एक अलग ब्रांच है और न्यूक्लियर रिएक्शन की अलग ब्रांच है. न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, न्यूक्लियर फिजिक्स अलग ब्रांच है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग ब्रांच है, एंड ओनली प्योर केमिस्ट्री इज अ डिफरेंट ब्रांच. आप कंपेरेटिवली आप, हाँ, एटम बॉम्ब, हाउ टू मेक अ एटम बॉम्ब, हाउ न्यूक्लियर रिएक्शन इज इनिशिएट, न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस एट वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. सन के सरफेस पर जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन है. ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होती. रिमेंबर दैट पॉइंट. इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी ने कमेंट बॉक्स में डाला है कि न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर ज्यादा रिएक्टिव है. नो डाउट न्यूक्लियर ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो आपको टेम्परेचर कम से कम मिनिमम 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लगेगा और प्रेशर 10,000 एटमॉस्फेयर से ज्यादा लगेगा, तब जाके न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. ऐसी, हाँ, अब आप पूछोगे यू कैन आस्क द हाउ द एटॉमिक रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट इन न्यूक्लियर रिएक्टर. दैट कैन, यू कैन
एक्स्ट्रा प्रोटॉन इज एडेड और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन यू कैन ऐड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होने वाली रिएक्शन है। हम जो रिएक्शन करेंगे, देखो आपका केमिस्ट्री में हम जो रिएक्शन देखेंगे वो जस्ट एक आउटर इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट के बारे में देखेंगे। हम इलेक्ट्रॉन वी कैन डील्स विथ molecules, we can deals with atom, not nucleus. Nucleus is a different part and the reaction are different. उनका अलग ही फिनोमेना है। ओके, सो we can have the how electron can arrange। ये इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हो जाएंगे, कैसे, अगर सपोज आपको पास कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, हाउ 6 इलेक्ट्रॉन कैन अरेंज इन द एटम। एटम के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हो जाए, फर्स्ट शेल में कितने, सेकंड शेल में कितने और थर्ड शेल में कितने, हाउ दे कैन अरेंज, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केमिस्ट्री। सो मैंने कैसे लिखा ये आपको देखो, वाई एक्सिस में एनर्जी लिया, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस लिया। जैसे जैसे हम ऐसे देखो, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, डिस्टेंस बढ़ गया, थर्ड शेल अगेन डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्थ शेल अगेन डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ गया। मतलब हम जैसे जैसे एक्स्ट्रा शेल ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो हम 1, ये जो नंबर है ये मेन शेल दिखाता है, 1s, देन 2s, देन 3s, देन 4s। 1s में कितने ऑर्बिटल है, सिर्फ 1 ऑर्बिटल है। 2s में कितने, 2s 2p 2 ऑर्बिटल है। 3s में कितने ऑर्बिटल है, 3 में 3s 3p 3d 3 ऑर्बिटल है। देखो कैसे, 1s में कितने ऑर्बिटल है, ओनली 1। 1 में कितने ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है, s। अब सेकंड शेल में जाएंगे, फर्स्ट शेल हो गई, अब सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल 2 है, एक ये 2s और ये 2p। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3। फोर्थ शेल में कितने सब ऑर्बिटल है, फोर्थ ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, लाइक दिस, इजंट इट। सो 1s, अब 1s के बाद कौन सी शेल आती है, 2p। 1s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, 3d के बाद 4s, 4p, 4d, 4f, 4f के बाद 5f, 5s, 5p, 5d, 5f एंड अगेन इंक्रीजेस। मतलब अब 120 के बाद हमारे पास इतने एटॉमिक नंबर नहीं, इतने हमारे पास ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 120 के पार है, वैसे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। ये इतना है, 4s तक वो फिलअप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन in a nucleus. Okay, so let's look the what I have to explain. It is how to add the electron in atom in first shell, second shell, third shell, fourth shell. Okay, the first shell, it is having first 1s orbital, second shell having 2 orbital, 2s and 2p. In third shell there is a 3s, 3p and 3d orbital, and 4s having 4s, 4p, 4d orbital, and 5s, 5 orbital, 5s, 5p, 5d and 5f. So the electron can be added likewise and more detail and more इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आप ये याद रखो कि एटम क्या है, एटम में क्या क्या है, एटम कैसे रिएक्ट होंगे और केमिस्ट्री क्या है, how atoms are reacting together, which one bond are formed, how they are responsible to reacting together। ये सब हम आज जस्ट सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलो। इफ यू हैव एनी डाउट, ये हम बाद में भी नेक्स्ट लेक्चर में भी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो ग्राफ मैंने बनाया, ये नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, वेयर वी हैव अ वेरी स्मॉल टाइम, सो इट कैन बी, ये अगले लेक्चर के लिए हम फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कुछ डाउट हो तो बोलो आप। सर यस प्लीज, एनी डाउट्स, कुछ डाउट्स है तो बोलो। सर आई हैव वन क्वेश्चन। प्लीज आस्क मी एनी डाउट, अगर कुछ डाउट है तो आप बताओ मुझे। सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस प्लीज। सर सब इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 4 तक क्यों रहती है? इलेक्ट्रॉन नहीं, वो डिपेंड करेगा कौन सा एटम है। वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द एटम एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
वो हम अगली बार अगले अगले लेसन में अगले लेक्चर में हम हाउ टू फाइंड आउट वैलेंसी 4 हर टाइम 4 नहीं रहती, कार्बन की वैलेंसी 4 है, हर एलिमेंट की नहीं। अब जब हम सल्फर लेंगे तो उसकी 6 है, जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो उसकी 2 वैलेंसी है। वैलेंसी मींस व्हाट इज बाय वैलेंसी? द रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन, आउटर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन, आउटर के इलेक्ट्रॉन है वही केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्म पार्टिसिपेट करेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी हमेशा 4 नहीं रहेगी, कार्बन की 4 है, सल्फर की 6 है, सल्फर की 2 है, लिथियम की 1 है, हाइड्रोजन की 1 है, लाइक दिस वैलेंसी में भी वेरिएबल। वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ आउटर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस प्रज्वल, हाँ यस प्रज्वल, प्रज्वल याद हो, यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन नथिंग, इट इज अ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। Sir, does last shell has very less electrostatic force? The last shell electron are weakly bonded. Last shell electron are weakly bonded. अब आप देखो, मैं यहाँ पे हूँ और बहुत दूर कोई खड़ा है, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स कम होता जाएगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम कम स्ट्रेंथ का होगा, और जो नजदीक जो शेल है उसके ऊपर ज्यादा होगा। यस एनीबॉडी? यस प्लीज। ओके ओके, आई विल मैं अब लीव करूंगा क्योंकि मेरा लेक्चर अब खत्म हो गया, और कुछ डाउट है, कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे और ज्यादा टाइम दो, अगले लेक्चर में हम ये सब एक्सप्लेन करेंगे। सो मैं अब लीव करूंगा। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड थैंक यू एंड सर। गेट। ओके। Thank you, sir.